आज हम देखेंगे बेसिक एमसीक्यूज ऑन डायरेक्ट टैक्सेशन पार्ट 4 फॉर बीकॉम, एमकॉम, बैफ, बीएमएस, बीबीआई, बीएफएम, बीआईएम, आईपीसीसी एंड सीएमए। तो स्टार्ट करेंगे बेसिक एमसीक्यूज ऑन डायरेक्ट टैक्सेशन। First, which of the following tax is allowed as a deduction while computing the business income? Wealth tax, income tax, GST, advance tax. जब हम बिजनेस इनकम कंप्यूट करते हैं तब हम जीएसटी अलावेबल डिडक्शन लेते हैं। वेल्थ टैक्स, इनकम टैक्स एंड एडवांस टैक्स ये डिसअलावेबल एक्सपेंसेस है। तो आंसर allowable expenses is GST. Second, short-term capital gain arise on transfer of shares and units held by the assessee for not more than 36 months from the date of acquisition, 12 months from the date of acquisition, 54 months from the date of acquisition, 24 months from the date of acquisition. ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड यूनिट्स के लिए 12 मंथ का जो पीरियड होता है लेस देन 12 मंथ होगा तो शॉर्ट टर्म होगा, 12 मंथ से ज्यादा होगा तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो सकता है। तो आंसर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए हम 12 मंथ का पीरियड रखते हैं। तो आंसर 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन। Third, the assessee is allowed to option for market values as on 1st April 2001 in case of all capital assets other than depreciable assets, only house properties, all capital assets other than house properties. तो मार्केट वैल्यू का जो सिस्टम होता है वो हम ओनली हाउस प्रॉपर्टी के लिए अलाउड करते हैं। तो आंसर ओनली हाउस प्रॉपर्टी। फोर्थ, इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन द अमाउंट टू बी डिडक्टेड फ्रॉम सेल कंसिडरेशन शैल बी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मार्केट वैल्यू ऑन 1st April 2001, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। जब हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कंप्यूट करते हैं तब डिडक्टेबल अमाउंट जो होता है उसके लिए हम इंडेक्सेशन यूज करते हैं। तो आंसर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ये हम डिडक्ट करेंगे फ्रॉम सेल कंसिडरेशन। तो आंसर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। फिफ्थ, income from sale of household furniture is taxable capital gain, non-taxable as capital gain, short-term capital gain, long-term capital gain। जब हम सेल करते हैं हाउस होल्ड फर्नीचर तो ये कैपिटल गेन में टैक्सेबल नहीं होता है। तो आंसर नॉट टैक्सेबल एज कैपिटल गेन। 6. Deduction under section 80CCC is allowed to the maximum of rupees 50,000, rupees 1,50,000, rupees 1 lakh, rupees 2 lakh. Deduction under section 80CCC के लिए मैक्सिमम अलावेबल डिडक्शन है रुपीज 1,50,000। तो आंसर रुपीज 1,50,000। Seven, to be long-term capital assets, a residential house property should be held for more than 12 months, 24 months, 36 months, 60 months. तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स के लिए रेसिडेंशियल हाउस होता है वो हमें मोर देन 36 मंथ के लिए रखना है। 36 मंथ से ज्यादा रखा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, 36 मंथ से कम होगा तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। तो आंसर 36 मंथ।
8. Shares held for less than 12 months are short-term capital gain, long-term capital gain, exempted capital assets, excluded from definition of capital assets. जब हम शेयर्स के बारे में बोलेंगे तो उसका पीरियड 12 मंथ से कम होगा तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, और 12 मंथ से ज़्यादा होगा तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। तो आंसर लेस देन 12 मंथ के लिए ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। तो आंसर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। 9. Indexation is applicable to sale of short-term capital assets, sale of long-term debentures, sale of depreciable capital assets, sale of long-term capital assets which are not depreciable assets. जो इंडेक्सेशन एप्लीकेबल होता है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स के लिए होता है और वो डेप्रिसिएबल एसेट्स नहीं होना चाहिए। तो आंसर डी, सेल ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स विच आर नॉट डेप्रिसिएबल एसेट्स। 10. Short term capital gain on sale of unlisted shares are taxable, exempted, partially taxable। जब हम सेल करते हैं अनलिस्टेड शेयर्स फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड तो ये टैक्सेबल होता है। तो आंसर टैक्सेबल। 11. The cost inflation index number of the previous year 1920 is 286, 236, 100, 300. Cost inflation index for previous year 1920 is 286. So answer A, 286. 12. For claiming exemption under section 54, the assessee should purchase residential property 2 years after the date of transfer, 5 years from the date of transfer, 1 year before and 2 years after the date of transfer, 1 year before and 3 years after the date of transfer। जब हम क्लेम करेंगे अंडर सेक्शन 54 तो असेसी को परचेस करना है रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी फॉर बिफोर 1 year and after 2 years। तो आंसर सी, 1 year before and 2 years after the date of transfer या फिर 3 years after the date of transfer। तो आंसर सी। 13. Exemption under section 54 EC shall be available to any assessee, individuals only, individuals or HUF, company assessee only। एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 EC जो होता है वो सब असेसी के लिए एप्लीकेबल है। तो आंसर एनी असेसी। 14. For claiming exemption under section 54 EC, amount to the extent of capital gain subject to maximum of rupees 50 lakhs should be invested within 2 years from the date of transfer, within 3 years from the date of transfer, within 6 months from the date of transfer, within 6 months from the date of transfer, or before the due date of furnishing the return of income, whichever is earlier। जब हम 54 EC का जो डिडक्शन एप्लीकेबल होता है वो 6 मंथ के लिए होता है। तो आंसर ये जो आपको इन्वेस्टमेंट करना है विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर होना चाहिए। तो आंसर सी, विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। 15. For claiming exemption under section 54 EC, the amount to the extent of capital gain subject to maximum 50 lakhs should be invested within 6 months from the date of transfer,
State Bank of India, notified securities, State Bank of India or notified securities, bonds of the NHAI और RECL. जब हमें एग्जेम्पशन चाहिए 54 EC का with subject to maximum 50 lakhs, the amount should be invested within 6 months from the date of transfer in bonds of the NHAI or RECL. So answer D, bond of NI or RECL bonds. थैंक यू. शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो.